everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're going to start with your cloud computing class, and cloud computing का class जो है आपका वो 119 है. ऑलरेडी हमने 118 क्लासेस कर लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज जो हम डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के जो भी आपके 2 मार्क्स पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज के क्लास में हम यूनिट 4 के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड. क्या रिसोर्स मैनेजमेंट और सिक्योरिटी जो होती है क्लाउड में उसको हम डिस्कस करेंगे. उसके पॉसिबल जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में. एंड दिस इज योर 119 क्लास एज आई विल रिमाइंड यू देयर. एंड सो दे कैन आस्क यू अबाउट द इंटरक्लाउड. सो व्हाट इज इंटरक्लाउड? इंटरक्लाउड पूछेंगे, इट मीन्स you can just define in a 2 marks question. Intercloud is a concept of connected cloud. बेसिकली मैंने इंटरक्लाउड के बारे में जब मैंने यूनिट को कवर अप किया था और इन ब्रीफ, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जैक्टली एक्यूरेट आपको बहुत कंसाइज होना पड़ता है. इस वजह से मैं ये क्लासेस लेके आ रही हूँ जो आगे के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें से इंटरक्लाउड जो होता है. इंटरक्लाउड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग clouds of network, including public, private and hybrid cloud. It incorporates the number of technologies to improve the interoperability and portability among the cloud network. तो बेसिकली इंटरक्लाउड की अगर हम बात करते हैं तो इंटरक्लाउड जो एक तरह का ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप नेटवर्क्स और क्लाउड्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करते हो. आपका पब्लिक क्लाउड नेटवर्क भी हो सकता है, प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क भी हो सकता है और हाइब्रिड क्लाउड नेटवर्क भी हो सकता है. और ये बेसिकली आपके नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज़, आपके टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करता है, चाहे वो इंटरऑपरेबिलिटी के बेसिस पे हो या फिर आपका पोर्टेबिलिटी के बेसिस पे हो अमंग द क्लाउड नेटवर्क्स. Now we'll deal with the types of intercloud network. They can ask you the types of intercloud resource management network, so that you have to define. So there are the 2 types of intercloud resource management. The first is federation cloud and the second is multi-cloud. Federation cloud and multi-cloud, these were the 2 types of intercloud resource management. The first, federation cloud क्या होता है? A federation cloud is an intercloud where a set of cloud providers willingly interconnect their cloud infrastructure in order to share resource among each other. तो फेडरेशन क्लाउड जो होते हैं वो आपके ऐसे क्लाउड इंटरक्लाउड हैं जहाँ पे आपके set of cloud providers they are willingly to interconnect their cloud infrastructure in order to share the resource among each other. Where the multi-cloud is, in a multi-cloud a client or a resource service users multiply independent cloud. A multi-cloud environment has no volunteer interconnection and sharing of cloud. Now we'll deal with about the topologies used in the intercloud architecture. So there are basically 4 topologies that are dealing with the intercloud architecture. First topology is peer-to-peer intercloud federation. पहला है पेयर टू पेयर, आपका जो होता है पेयर टू पेयर इंटर क्लाउड फेडरेशन होता है. सेकेंड वन इज सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फेडरेशन. दूसरा आपका सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड होता है जिसमें एक सेंटर पे होता है और उसके थ्रू कम्युनिकेट होता है. एंड दिस थर्ड वन इज मल्टी क्लाउड सर्विसेज, जो कि मल्टी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. फोर्थ आपका है मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज. तो बेसिकली यहाँ पे आपके 4 टाइप के होते हैं. ओके, दिस इज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन द इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर. Now moving on with the next one with reference to the unit 4 resource management and security in cloud with of 2 marks questions that we are dealing here is. Here we can understand that I can ask you about the resource management. What is resource management? Define resource management. With reference to the resource management, resource provisioning means the selection, deployment and the runtime management of software and hardware resource for ensuring the guaranteed performing for an application. तो basically resource management जो होता है वो आपका एक provisioning है जहाँ पे आप select करते हो, deployment होता है and runtime management के time पे ही software जो hardware resource है वो ensure करते हैं guarantee को for their performance for their application. That what you can define in the form of resource management. If they had asked you about the what is resource management, define resource management, then you can define this. Resource provisioning means the selection, deployment and the runtime management of software and hardware resource for ensuring guaranteed performance for an application. This what resource management is all about.
When we are discussing the resource management here, so now we'll discuss the types of resource management provisioning. You can see the types of resource provisioning that we will discuss here with reference to the resource management only. So there are the three types of resource management, resource provisioning. First is your static provisioning, second is your dynamic provisioning, and third is your user self provisioning. With this, static provisioning is for application that have predictable and generally unchanging demands workload. Static provisioning is used जब कोई ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपका प्रिडिक्टेबल हो कि अब यही परफॉर्म करना है, ओके, एक जनरली जिसमें कह सकते हैं आपके किसी भी डिमांड्स में या वर्कलोड्स में चेंज ना आए, तो वो प्रिडिक्टेबल हो, तब हम स्टैटिक प्रोविजनिंग को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ कॉपीज़ को आपको काउंट करना है, तो नंबर ऑफ कॉपीज़ को ही काउंट करना है, तो ऑफकोर्स उसमें आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक प्रोविजनिंग को लगा सकते हो सिमिलर वर्क के लिए. फॉर एग्जांपल, आपको कोई चीज़ का डिटेक्ट करना है करेक्शन को, तो आप उसके लिए आप डिटेक्शन अगर ही करना है तो फिर आप रिसोर्स स्टैटिक प्रोविजनिंग को यूज़ कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ रिसोर्स provisioning there. Now the second one is dynamic provisioning. Dynamic provisioning in the case that where demand by application may change or vary, dynamic provisioning technique is used. तो dynamic provisioning में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि जहाँ पे आपकी जो डिमांड है एप्लीकेशंस की वो चेंज हो सकती हैं, वैरी हो सकती हैं, तब आप डायनेमिक प्रोविजनिंग टेक्निक को यूज़ करते हो. विद रिलेटेड पता चला आप एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, डिमांड पता चला उसमें कुछ वैरी हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइप के लिए आप अपना डायनामिक प्रोविजनिंग को यूज़ कर सकते हो. Now with the next one that we have here, the user self provisioning. So with the user self provisioning, also known as the cloud self services, the user self provisioning को हम cloud self services भी बोलते हैं. The customer purchases resource from the cloud provider through a web form, creating a customer account or paying for resource with credit card as well. This is what done by the user self provisioning, where it is also known as a cloud self services. So the first one is static provisioning, in which the demands, or there are the demand that cannot be changed, that is predictable, then we can use the static provisioning. The second one we have is for dynamic provisioning, and the dynamic provisioning, in that case, or we the application may change or vary the demands, then we can use the dynamic provisioning technique. And the third one, the user self provisioning, that I had told you before also, that is known as cloud self services, and that the customer purchase some resources from the cloud provider through a web form, and that creating a customer or account, paying, and of course the resonance with the credit card, then we are using the user self provisioning here. So now we'll deal with the parameters used for the resource provisioning. The parameters that are used for the resource provisioning. So as you can see that there are the 6 parameters that used for the resource provisioning. So these were the 6 parameters, and the first parameter is response time. Response time पहला parameter है. Response time बहुत ही एक important role play करता है. That is the first parameter of course for the resource provisioning as well. सेकेंड वन इज मिनिमाइज कास्ट. कास्ट मिनिमाइज करता है. रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है. फॉल्ट टॉलरेंट होता है, फॉल्ट को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी होती है. दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मैनेजमेंट पैरामीटर्स दैट वी डील विद. रिड्यूस SLA वायलेशन. SLA वायलेशन को भी रिड्यूस करता है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट का पैरामीटर. And as well as resource power consumption, reduce power consumption, reduce SLA violation, as well as reduce power consumption. These were the 6 important parameters that are used for the resource provisioning. Now we deal with the next one that we have here is, now we deal with the various market-oriented techniques that we have. So there are the various market-oriented techniques that it is. There are the 5 types of various market-oriented technique. That 5 types. First is Aneka, second is workflow engine, third one is Metacon, and the fourth is cloud sim, and fifth one is resource management. These were the 5 different market oriented techniques that are the various techniques we are dealing with here.
with the market-oriented techniques that we are dealing with. Now moving on with the next one, that we have our security challenges related to deployment model. क्या क्या security challenges हम face करते हैं with reference to the deployment model that we will discuss here. As you can see that there are the 6 different security challenges that is related to the deployment model here. The first is cloning and resource pooling. Cloning एक same हम clone बना लेते हैं, उसलिए yes cloning and as well as resource pooling. मोडिलिटी ऑफ डेटा एंड डेटा रेसिडुअल. मोडिलिटी हम कर लेते हैं, मोटिलिटी जिसे कहते हैं, मोटिलिटी डेटा का कर लेते हैं, डेटा रेसिडुअल्स बना लेते हैं. तो ये भी हमारा सिक्योरिटी चैलेंज होता है जो कि डिप्लॉयमेंट मॉडल के रिलेटेड है. थर्ड वन वी हैव इलास्टिक पैरामीटर. इसका जो पैरामीटर होता है वो बहुत ही इलास्टिक होता है. फोर्थ वन इज शेयर्ड मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट. हम इसमें मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट को भी शेयर करते हैं. फिफ्थ वन इज अनएनक्रिप्टेड डेटा. अनएनक्रिप्टेड डेटा होता है, एनक्रिप्टेड डेटा नहीं होता. एनक्रिप्टेड डेटा मतलब कोडेड डेटा नहीं होता, अनएनक्रिप्टेड डेटा होता है. इस वजह से भी सिक्योरिटी फेस करनी पड़ती है हमको इन द रेफरेंस टू द डिप्लॉयमेंट मॉडल हियर. The sixth one is authentication and identity management. Basically authentication किसको है और किसको यूज़ करना है उसके हिसाब से प्लस उसकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट भी हमारा यहाँ पे लैक करता है. इस वजह से ये हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है विद रेफरेंस टू द डिप्लॉयमेंट मॉडल. Now we deal with here the security challenges with a service model. ये तो deployment model के जो हमने 6 पढ़ लिए, जैसे कि deployment model का आप देख सकते हैं, cloning and resource pooling. Second is motility of data and the data residual. Third is elastic parameter. Fourth is shared multi-tenant environment. Fifth is unencrypted data, and the sixth one is authentication and identity management. Now we are dealing with the security challenges with the service model. Service model से हम क्या आपके security challenges face करते हैं? So there are total 8 security challenges that we are facing, that we have a challenge with related to the service model. फर्स्ट चैलेंज जो है डेटा लीकेज एंड कॉन्सिक्वेंट प्रॉब्लम. डेटा लीकेज की प्रॉब्लम होती है, डेटा लीक हो जाता है, एक ये कॉन्सिक्वेंट प्रॉब्लम रहती है. सेकेंड वन इज़ जो मैलिशियस अटैक. मैलिशियस अटैक मतलब वायरसेस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा या सर्विस मॉडल में अगर आपके मैलिशियस अटैक्स हो जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम कर देता है. तो ये थोड़ा सर्विस मॉडल में रहता है. थर्ड वन इज़ बैकअप एंड स्टोरेज. बैकअप नहीं उतना हो पाता, स्टोरेज इतना नहीं अवेलेबल होता. इस वजह से भी ये सिक्योरिटी चैलेंज है जो कि सर्विस मॉडल में हमें फेस करने को मिलता है. फोर्थ इज शेयर्ड टेक्नोलॉजिकल इशूज. जो टेक्नोलॉजिकल इशूज़ होते हैं उन्हें हम शेयर्ड टेक्नोलॉजिकल इशूज़ होते हैं. सर्विस हाईजैकिंग होती है. सर्विस जो हम एक्चुअली ले रहे हैं उसको अगर हाईजैक कर लिया गया तो सर्विस हाईजैकिंग होती है, जिसका कोई मिसयूज़ कर सकता है, जिसको एक्चुअली हम अथॉरिटी नहीं देना चाहते अपने डेटा की, अपने सर्विसेज की, वो उसको अगर हाईजैक कर लेता है तो फिर उसका मिसयूज़ भी कर सकता है. दैट इज़ ऑल्सो द लैक हियर एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स द बिग चैलेंज ऑफ कोर्स फॉर द सर्विस मॉडल. नेक्स्ट इज योर 6 VM हॉपिंग. दैट इज़ वर्चुअल मशीन हॉपिंग हो जाती है. VM मोबिलिटी, वर्चुअल मशीन मोबिलिटी हो जाती है. वर्चुअल मशीन डिनायल ऑफ सर्विसेज, DOS जिसे बोलते हैं, VM DOS, वर्चुअल मशीन डिनायल ऑफ सर्विसेज भी हमें फेस करना पड़ता है. तो बेसिकली इन ऑल टोटल वी कैन से दैट द सिक्योरिटी चैलेंजेस with related to the service model, there are the 8 services security challenges that we are facing here as your data leakage, consequent problem, malicious attack, backup and storage, shared technological issues, service hijacking, virtual machine hopping, virtual machine mobility and virtual machine denial of services. तो 2 मार्क्स में अगर वो पूछते हैं आपसे कुछ भी कि लाइक रिप्रेजेंट एक्सप्लेन और ये स्टेट सिक्योरिटी 6 security challenges with a service related to the service model or with related to the deployment model, then you can answer all these that what we had mentioned here. Okay, directly they can ask, you can ask, they can ask you and you can write it down. Now the next one we have here the properties of virtual machine, जिसे हम properties of VM भी बोलते हैं, properties of virtual machine जिसे हम कहते हैं. virtual machine की properties क्या है? पहला आपका है efficiency बहुत होती है, that can improve the services as well. Second one is resource control रहता है आपका virtual machine का reference में. and third आपका equivalence होता है. equivalence services आपको provide की जाती है. properties जो है आपके 3 virtual machine की मिल गई यहाँ पे आपको. तो 3 जो वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से एक आपका एफिशिएंसी है, सेकेंड आपका रिसोर्स कंट्रोल है, थर्ड इज योर इक्विवेलेंस. तो दे कैन आस्क यू स्टेट 2 प्रॉपर्टीज या स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल मशीन और दैट हैविंग कंसिस्ट ऑफ
2 marks, you can state the three properties of virtual machine, and even though you can get the you will get your marks, of course. So they can directly ask you, and you don't have to make a theory or something, as some such type of a story. You can directly answer those. Now moving on with the next one that we have here with reference to the unit 4 only. Now we'll deal with implement a virtual machine. So what were the implementations related to the virtual machine that we are dealing with? First is your process virtual machine, जिसे हम PVM बोलते हैं, process virtual machine, and the second one is system virtual machine, that is SVM. तो ये आपका process virtual machine और second is system virtual machine, ये दो virtual machines हैं जो कि आपके implementation of virtual machine में used होते हैं. Now we deal with what is IAM. IAM मैंने आपको, जब मैंने already बताया था आपको, जब मैंने थ्योरी ब्रीफ में पढ़ाई थी तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई थी. एंड IAM क्या होता है? IAM identify and access management, that you have to be very careful and you have to be learn all these terms that are related to this. So of course IAM, identity and access management, that is IAM, is a system that secures, stores and management user identities and access privileges. It ensures that the user can only get access to an application of the resource only if they have the permissions to use them. तो IAM जो होता है वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है. ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे वो सिक्योर करता है, स्टोर करता है, एज वेल एज मैनेज करता है उनकी यूज़र आइडेंटिटीज़ को, एक्सेस करता है प्रिविलेजेस को. उसके साथ साथ वो इंश्योर भी करता है कि अगर आप एक्सेस कर रहे हो किसी एप्लीकेशन को या किसी रिसोर्स को, तो तभी आप कर सकते हो जब आपके पास उस रिसोर्स की या उस एप्लीकेशन को यूज़ करने की अथॉरिटी है, आपको परमिशन गिवन है, तभी आप IAM आपको अलाउ करेगा, और अलाउ करने के बाद आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो. बट अगर आपके पास परमिशन नहीं है, सो यू आर नॉट एबल टू यूज़ दो सर्विसेज, दोज एप्लीकेशन, दोज रिसोर्सेज that has been identified and access management, that is IAM. Now we have a deal with here, this is benefits of IAM. What are the benefits of IAM? The first benefit is improving user experience. User experience को improve करता है. Second is enhancing the security profiles. Security profiles को enhance करता है. Third one is simplifies auditing and reporting. Audit और report को simplify करता है. Fourth one is allow easy access allow करता है. And the fifth one is increase productivity and reduce IT cost. IT cost को कम करता है as well as productivity को increase करता है. तो improving user experiences को improve करता है because हर एक किसी को नहीं यूज़ करने देता. Enhance security profile तो बहुत मस्ट होता है किसी भी सर्विसेज के लिए. तो सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करता है, फिर तब उसको एक्सेस करने देता है मैनेजमेंट को. अगर आपके पास परमिशन है तब आप उसके रिसोर्स को, उसके एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते. तो दिस एनहांस द सिक्योरिटी प्रोफाइल्स ऑल्सो. एंड सिंप्लीफाई ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग. सिंप्लीफाई करता है ऑडिटिंग रिपोर्टिंग को, अलाउ करता है ईजी यूज करने के लिए. ईजी यूजफुल होता है, ऐसा नहीं सारी प्रॉपर्टी सारी चीज़ अच्छी हैं बट यूज़ करने में ही टफ है, तो ऑफकोर्स कोई भी नहीं चाहेगा उसको यूज़ करना है सच. तो अलाउ इजी एक्सेस होता है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड द ऑफकोर्स रिड्यूसेस द IT कॉस्ट. दिस इज ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफ IAM. Now related to talking about resource provisioning method. अब कौन कौन से तरह के बेसिकली अगर हम benefits of IAM की बात करते हैं तो there are the 5 benefits of IAM that I had told you. Now we'll deal with the resource provisioning method. Resource provisioning method क्या होते हैं? Resource provisioning method basically that are demand driven resource provisioning. Demand driven resource provisioning. Second one is event driven resource provisioning. The third one is popularity driven resource provisioning. तो यहाँ पे 3 तरह के आपके resource provisioning methods होते हैं. पहला है demand driven resource provisioning. Second one is event driven resource provisioning and the third one is popularity driven resource provisioning. तो एक डिमांड बेस होता है, एक इवेंट बेस होता है, एक पॉपुलैरिटी बेस होता है. ये तीनों आपके रिसोर्स प्रोविजनिंग के मेथड हैं. नाउ वी डील विद द क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल. क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल किस किस के पास होता है, किस तरह से हम क्लाउड सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं. पहला है आपका डिटेक्टिव कंट्रोल होता है. Second one is preventing control. Third one is deterrent control and the fourth one is corrective control. पहले वो डिटेक्ट करेगा सिक्योरिटी को, उसके बाद वो प्रिवेंट करता है कंट्रोल को, देन उसके बाद डिटरेंट करता है एंड देन करेक्ट करता है, करेक्टिव कंट्रोल. सो देयर आर all total you can say that there are 4 types of cloud security controls that are detective control, preventive control, deterrent control and of course the corrective control. Next, moving on with the next one that we have with reference to the unit 4 only, that money move portion of 2 marks that we deal with.
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस के, दैट वी विल डील। तो यहाँ पे पहला आपका स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट होता है, स्ट्रैटेजिकली वो पूरा अलाइनमेंट किया जाता है सिक्योरिटी गवर्नेंस का। सेकेंड वाला है वैल्यू डिलीवरी, जो आप वैल्यू करते हो, जो आप सर्विस चाह रहे हो वही आपको डिलीवर भी करता है। थर्ड आपका है रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को मिटिगेट करता है। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स का इफेक्टिव यूज देता है। एंड द फिफ्थ वन इज सस्टेन्ड परफॉर्मेंस जो होती है वो हमेशा सस्टेन्ड रहती है। तो देर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। First is strategic alignment, second is value delivery, third is risk mitigation, fourth is effective use of resource, and the fifth one is sustained performance. Now we deal with the cloud security standards. What were the cloud security and standards that we are dealing with? The first one is information technology infrastructure library. Cloud security standard का पहला standard है आपका information technology infrastructure library. तो information technology infrastructure library जिसे हम ITIL बोलते हैं, information technology infrastructure library. Second one is open virtualization format. Open virtualization format होता है जिसे हम OVF बोलते हैं. थर्ड वन इज ITU.TX.1601, ये आपका थर्ड आपका क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है. The fourth standard is payment card industry data security standard. Payment card industry data security standard. This is the fourth standard, that is PCI DSS. This is the fourth cloud security standard that we have here. The fifth standard is ISO/IEC, where it is. So here the industry rate, this is the fourth one, and the fifth one we have ISO IEC 27017 code of practice for the information security control. This is the fifth one and the last one, the cloud security standard. So first आपका है information technology infrastructure library, that is ITIL. Second one is open virtualization format, OVF. Third one is ITU.TX.1601. The fourth one is payment card industry data security standard, that is PCI DSS. And the fifth one is ISO/IEC 27017 code of practice for information security control. These were the 5 cloud security standards that we are dealing with. Basically we had discussed all the unit 4 possible 2 marks question that the university can ask from your side. And of course these were the questions that are possible for the 2 marks question. You can directly answer all these answers what they are asked you. You can write you can make a notes as well. You can write all those questions in one way that you can go through with these, and you can revise also. And in the next coming class, in the that thing, that is 120th class, in that class we will complete unit 5 2 marks possible question, and then after that we will end up with your cloud computing classes as well. So now class, if you had not subscribed to our channel, if you had seen our channel first time, so it's a request key, go to the subscribe button, and if you like our videos, do like and share, and share and subscribe our channel. Now thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel. And thanks for all those subscribers, those who had subscribed before, because of you all we had reached 1000 subscriber. And thanks for all of you that who had supported us and that who want to supported us. Please, thanks for that. Thanks for your support. We are doing more emphasize our knowledge, and even though we will provide you more emphasized knowledge with related to the English vocabulary as well as your chemistry, cloud computing. Of course the next class is the end of the cloud computing. So whatever the demand of your side, from your side, of related to the cloud computing, we will deal with that also. And we will do your operating systems also, and of course many more. Thank you.